Good afternoon, students. Let's continue our chapter 2 polynomial, and today we will see part 6, and this is the last part of this chapter. So we'll finish and complete the chapter by today. Okay, I hope that you have already revised part 1 to 5 very well so that you can understand this part 6 easily. Okay, so let's continue. In the last and previous video, we were discussing about the division algorithm for polynomials. Okay, we know that how to divide the polynomials. So let's revise our concept and let's do one sum. Okay, the first one is that divide, how the question is asked in examination. Divide, sorry for my pen, divide x power 4, write down the question, x power 4 minus 3x power 2 plus 4x plus 5 divide x power 4 minus 3x square plus 4x plus 5 by x square plus 1 minus x. So one polynomial will be divided by another polynomial. So this is our original question, x power 4 minus 3x square plus 4x plus 5. Okay, now kindly check about px. How we are getting px and gx? So don't forget this format. It is px, it is divided by another polynomial, that is gx, that is qx, and it is divided by rx. Sorry, the rx, it is remainder. Okay, when it is px is divided by qx, this is quotient polynomial, and this rx is remainder polynomial. Please, okay. Now look at, we have two polynomial, x power 4 minus 3x square plus 4x plus 5, and another polynomial is x square, another polynomial is x square plus 1, x square plus 1 minus x. Okay, what is the main problem? Which is px and which is gx? Which is px and which is gx? Power of polynomial is 4 here, power of polynomial is 2 here. So if power of one polynomial is greater than power of second polynomial, then first polynomial will be px and another one will be gx. It is okay. So px has always greater or equal power than gx, always greater than or equal power than gx. Okay, so our px, now look at here very carefully. Look at our px. Px is x power 4 minus 3x square plus 4x plus 5 plus 4x plus 5. Now one term missing, one term is missing here. Which one is that? X power 3. So we are not given anything about x power 3. So how we will write? First is x power 4, then x power 3 term is missing, so we will write plus 0x power 3, 0x power 3. It is okay. Why? Because x power 3 is missing. Then 3x square plus 4x plus 5. So this is our px, x power 4 plus 0x power 3 plus 4x plus 5. अगर आपको इसमें समझ में नहीं आया तो देखिए आप कि सीक्वेंस मेंटेन होनी चाहिए कि 4 पावर देन 3 पावर होनी चाहिए, देन 2 पावर, देन 1 पावर, एंड कांस्टेंट हैज 0 पावर. इट इज़ ओके. सो दिस सीक्वेंस शुड बी मेंटेन. तो हमारे पास 3 पावर वाला एक भी टर्म था नहीं, इसीलिए हमने क्या किया, उसको 0x पावर 3 लिख दिया. कि 0 लिखने से उसका कोई यहाँ पे सिर्फ प्रेजेंस रहेगी, उसकी कोई अफेक्शन यहाँ पे नहीं होगी. इट इज़ ओके. सपोज मान लो कि आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे कि x क्यूब प्लस 1, तो यहाँ पे 3 पावर देन डायरेक्ट 0 पावर है. तो 3 पावर के बाद क्या आएगा? तो 3 पावर के बाद आएगा सेकेंड पावर, मतलब 2 पावर, देन 1 पावर, देन 0 पावर. सो 3 पावर इज x क्यूब एंड 0 पावर इज प्लस 1. But we are not given anything about second power and first power. So what we will write? It is 0x power 2 and that is 0x power 1, that is 0x. Okay, and in the gx, what we are given? In the gx we are given that x square plus 1 minus x. So it is not arranged properly. So what we will do? Second power first, then 1 power, then plus 1. Please concentrate here that I have put this term with the minus sign. So minus sign is before the term x square minus x plus 1. You no need to change the sign. Okay, now let us start the division. I will divide it in 2 steps. Okay, first one, x power 4, 0x power 3.
Okay, then minus 3x square, then plus 4x, then plus 5. And this polynomial is divided with x square minus x plus 1. Px and gx we have already written. Now, same procedure we will do. X power 4, x power 2. Multiplication with x power 2. Multiply each and every term. X power 2, x power 2, x power 4, plus plus plus, minus plus minus, x and x cube, that is 1 x cube. Okay, that is 1 x cube, plus 1 plus x square, that is plus x square. It is okay. Now change the sign. Don't forget to change the sign. Why? Because we are doing division, and in division we will do subtraction. It is minus, it is plus, and it is minus. So plus and minus equal terms, it is cancelled out. Look at here very carefully. It is plus 1x cube, plus 1x cube, plus 1 plus 0, it is plus 1, plus 1x cube. Minus 3 minus 1, minus 3 minus 1x square, it is minus 4x square. And please put down the second term, that is plus 4x, only this term plus 4x. Idea is clear? Okay. Now multiply with the second one. X power 3. It is x power 3, x power 2. Then we will write here plus x. It is plus x. Now multiply x square and x. So plus x cube, minus plus minus, it is minus x square, plus plus plus, it is plus x. Okay. Now let's change the sign. Let's change the sign. It is minus, it is plus. Why? Minus will be converted into plus and plus will be converted into minus, and this is also minus. समझ में आ रहा है ना? So plus x cube plus x minus x cube cancelled. minus 4 plus 1, x square की लाइन में आंसर तो x square ही आएगा. minus 4 समझिए, minus 4 plus 1, that is minus 3. So it is minus 3x square. Plus 4 minus 1, that is plus 3x, and plus 5, I will bring down this term plus 5 here. It is okay. Now the last step. Look at the first term. It is minus 3x square, and here is x square. So minus 3 is remaining. So minus 3. How we will write? प्लीज़ आप उसको पूरा लिखिएगा, मेरे पास जगह थोड़ी कम है. minus 3. So it is minus 3x square. Okay. Minus minus plus. Don't forget, this is the minus and this is minus. Minus minus plus, it is plus 3x. Okay. Plus 1 minus 3, that is minus 3. And if we will change the sign, it will be like this. See, ये plus minus है वो हो जाएगा plus, ये plus है हो गया minus, और ये minus हो जाएगा plus. It is okay. समझ में आ रहा है ना? Please compromise with the space. Okay. 3x square minus 3x square cancel. Plus 3. Look at here. It is plus 3x and minus 3x, that is also cancelled. Plus 5 and plus 3, your answer is plus 8. And lastly, whatever it is remaining, that is our remainder, that is Rx. So what is our Rx for this polynomial? That is plus 8. And what is Qx? The Qx is this polynomial. Okay. So what is Qx? It is x square. X square plus x minus 3. It is okay. So kindly revise the whole sum. You will get the clear idea. Okay. Now what is remaining? If remainder is 0, write down the statement. If Rx it is 0, अगर Rx में 0 मिल रहा है, then we can say that Gx is a factor. Gx is a factor of Px. Also we can write Qx is a factor of Gx. Don't forget to write is a factor of Vx. Write down these two statements. If whenever your Rx is 0, अगर Rx में आंसर 0 आ रहा है, तो वो जो Gx है that is factor of Vx, एंड जो Qx है दैट इज़ ऑल्सो फैक्टर ऑफ Px. ये मैंने इसलिए लिखा है कि आगे वाले क्वेश्चन में इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है. राइट. नाउ सेकेंड वन, इफ Gx and Qx, if Gx and Qx are the factors, if Gx and Qx are the factors of Px, so we can write that Px is multiplication of Gx and Qx. Write down this statement also. If Gx and Qx अगर Px के factors है, so Px can be written in the multiplications of Gx and Qx. Okay. Now how we will write factors from zeros? Another theory. Zeros to factors. Already I have discussed it once. Okay. So zeros to factors. If 7 is a 0,
If 7 is a 0, now what is factor? That is x minus 7. Okay, we have generalized form. It is plus, then do it minus. If it is minus, then do it plus. If minus 8 is a factor, then 0 is a if minus 8 is 0, then x plus 8 is a factor. If 1 divide 2 is a 0, then x minus 1 divide 2 is a factor. It is okay. Are you getting it? If root 5 is a 0, then x plus root 5 is a factor. If plus root 2 is a 0, then x minus root 2 is a factor. If माइनस रूट 5 डिवाइड 3, ये मैं सिर्फ बुक के ही जो एग्जाम्पल है वही लिख रहा हूँ, माइनस रूट 5/3 इज अ 0, देन व्हाट विल बी द फैक्टर? x प्लस रूट 5 डिवाइड 3. x प्लस रूट 5 डिवाइड 3. समझ में आ रहा है? हाउ वी आर गेटिंग 0 टू फैक्टर. तो बेसिकली आप ये याद रखिए, 1 है 0 तो x माइनस 1 फैक्टर होगा, माइनस 1 0 है तो x प्लस 1 फैक्टर होगा. अब ये दो जो फैक्टर से जो पॉलिनोमियल बनेगा वो उन सब का मल्टीप्लिकेशन होगा. x प्लस 1 x माइनस 1, दैट इज x स्क्वायर माइनस 1. सो वी कैन से दैट कि 1 and माइनस 1 आर जीरोज ऑफ x स्क्वायर माइनस 1. समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? आपके सामने कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि फाइंड पॉलिनोमियल px, फाइंड सच पॉलिनोमियल px whose zeros are 3 and minus 4, whose zeros are 3 and minus 4. Kindly read the question first. Find the polynomial px whose zeros are 3 and minus 4. Now, if 3 is a 0, if 3 is 0 of px, then x minus 3 is one of the factor of the px. It is factor. If 3 is a 0, then x minus 3 is a factor. If minus 4 is a 0, then x plus 4 is a factor. It is okay? X plus 4 is a factor. If 3 is a 0 of px, then x minus 3 is a factor. If minus 4 is a 0, then x plus 4 is a factor. Now, what will be the px one? Then multiply both the factors. Then multiply both the factor. Now, our px will be multiplication of x minus 3 and x plus 4. अगेन आई एम रिपीटिंग, x माइनस 3 कहाँ से आया? तो प्लस 3 फैक्टर था, तो सॉरी प्लस 3 0 था तो x माइनस 3 फैक्टर हो गया. माइनस 4 0 था तो x प्लस 4 हो गया. नाउ मल्टीप्लाई, यू ऑलरेडी नो द मल्टीप्लीकेशन. x प्लस 4 आप ऐसे भी कर सकते हो, माइनस 3 x प्लस 4. इट इज़ x स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12. कहाँ से आया पता चल रहा है ना? स्टैंडर्ड 8. इट इज़ x स्क्वेयर plus minus minus but sign of bigger one. Your polynomial is this. Okay, so it is a reverse question. ये क्यों किया? क्योंकि अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि we have to find the remaining zeros. We have to find the remaining zero. ध्यान से इस क्वेश्चन को लिख दो क्वेश्चन और ध्यान से उसको समझने का ट्राई कीजिए. One example I will explain you. Find all the zeros of px. तो px क्या गिवन है लिख दो पहले. px is 2x power 4 3x power 3 minus 3x square plus 6x minus 2, that is px. Okay, अब समझो यहाँ पे what is the power of px? The power of px is equal to 4. px की पावर कितनी है? 4. So how many maximum possible zeros will be there? Maximum possible zeros will be 4. कितने zeros होंगे? तो 4 zeros होंगे. तो उन 4 जीरोस में से जो 4 जीरो है, उन 4 जीरोस में से व्हाट आर गिवन, तो कितने जीरोस दिए हैं कि √2 एंड माइनस √2. मतलब 4 में से सिर्फ 2 जीरोस यहाँ पर गिवन है और बाकी के 2 जीरोस हमको फाइंड करने हैं. एंड हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड, दैट इज अवर एक्चुअल क्वेश्चन. समझ में आ रहा है? अगेन आई एम रिपीटिंग ईच एंड एवरीथिंग. 2x पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर plus 6x minus 2. It is a given polynomial. What is the power of polynomial? That is 4. That means how many maximum zeros at most can it have? It has 4 zeros. Maximum it has 4 zeros. In those 4 zeros we are given only 2 zeros. They are √2 and minus √2. उनमें से सिर्फ 2 ही जीरो यहाँ पर गिवन है. कौन कौन से? √2 एंड माइनस √2. सो वी हैव टू फाइंड द रिमेनिंग जीरोज. तो रिमेनिंग कितने हुए? टोटल 4 थे. 4 में से 2 गिवन है तो कितने बाकी है? तो 2 जीरोज बाकी है. तो जो 2 जीरोज बाकी है वो हमको फाइंड करना है. क्लियर अबाउट एक्चुअल क्वेश्चन? नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. ओके, समझो. √2 इज 0 ऑफ px.
root 2 is a 0 of px, one of the 0 of px. So we can say that hence x minus root 2 will be factor, is a factor. It is okay. अभी हमने जो थियरी देखी वो. And second we are given minus root 2 is 0 of factor, minus root 2 is also 0 of factor, 0 of px, minus root 2 is also 0 of px. So x plus root 2 will be factor of px. ये factor और 0 में समझना. Okay, समझ में आ रहा है. So which are two factors given for the px? One is x minus root 2 and another is x plus root 2. X minus root 2 and another is x plus root 2. So multiply. See, px you are already given. Px you are already given. That is what मैं लिख रहा हूँ उसको 2x पावर 4 माइनस 3x पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2. अब gx कहाँ से लाए हम? तो देखो gx में जो आगे दो फैक्टर्स मिले, पता है ना, आप लिखते जाइए. x माइनस रूट 2 एंड x प्लस रूट 2 उनका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए. x माइनस रूट 2 एंड x प्लस रूट 2 उनका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए. नाउ यू कैन कंपेयर दिस विथ a माइनस बी a प्लस बी. वी कैन कंपेयर दिस विथ a माइनस बी a प्लस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. तो a स्क्वायर इज x स्क्वायर एंड b स्क्वायर. रूट 2 होल स्क्वायर इज 2 ओनली. सो इट इज x स्क्वायर माइनस 2. It is x square minus 2. So how we will divide it? X square minus 2, we can say that it is x square plus 0x minus 2. आप ये भी कर सकते हो फॉर इजीनेस. अगर आप डायरेक्ट इससे डिवाइड करोगे तो भी चलेगा. चलो मैं इस बार डायरेक्ट करके दिखाता हूँ आपको, राइट. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ, वी विल डिवाइड द गिवन px by gx. So we will get qx and remember this qx is also factor of this px. समझना ध्यान से. रूट 2 एंड माइनस रूट 2 दिया था, उसमें से हमने फैक्टर्स लिए, फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन किया, फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन करने से हमको gx मिला. अब जो गिवन px है उसको gx से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? qx. एंड डियर स्टूडेंट राइट वेल दैट rx कंपल्सरी 0 मिलना चाहिए. समझना ध्यान से, rx 0 मिलना चाहिए सो दैट यू कैन क्रॉस चेक योर सम. तो rx 0 मिलेगा और वो जो qx है वो उसका फैक्टर होगा. समझ में आ रहा है यहाँ तक? अगर नहीं समझ में आया तो बार बार उसको देखिए. जब तक यहाँ तक समझ में नहीं आता आगे मत बढ़िए. ओके, समझ में आ गया होगा तो चलो आगे बढ़ते हैं. चलो px को gx से डिवाइड कर देते हैं. तो आप ट्राई करिए, उसको डिवाइड करिए. 2x पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर. सॉरी, क्यों ऐसा हो रहा है आज? इट इज़ 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2. उसको डिवाइड करिए आप x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 2 से आप डिवाइड करिए. ओके, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर. एंड qx का आंसर क्या आ रहा है बताइए? rx का तो मैं कह दूंगा कि rx का आंसर 0 ही मिलेगा और मिलना ही चाहिए क्योंकि फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, राइट. सो क्या 0 मिल रहा है? जस्ट टेल मी. ओके, वीडियो को पॉज करिए, आपका qx का आंसर हमें बताइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं. आई होप आपने डिवीज़न कर लिया होगा, अच्छे से किया होगा, कोई भी क्वेरी नहीं होगी उसमें, प्लस की भी नहीं होगी, माइनस की भी नहीं, सब्ट्रैक्शन कोई भी क्वेरी नहीं होगी. और आपका qx का आंसर आया होगा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1. ये आंसर राइट है, ये आंसर मिलना चाहिए. ओके, अगर ये आंसर आ गया है तो देखो रिमेनिंग 2 जीरोस बाकी है. तो देखो इसकी भी पावर 2 मिली ना, इसलिए हम यहाँ से 2 जीरो फाइंड कर सकते हैं. तो वी कैन से दैट दिस qx इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ गिवन px. सो फाइंड आउट द जीरोस ऑफ दिस qx. अब इस qx के हम जीरोस फाइंड करते हैं. तो व्हाट इज qx? तो qx इज 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 कर लेते हैं. ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फैक्टर्स 2 1 ज़ा 2. सो वी कैन राइट इट 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0. ध्यान से इसको देख लो, हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कशन किया था उसका. क्लियर? आप वो पार्ट भी रिवाइज कर लीजिए. टेक आउट 2x कॉमन, x माइनस 1 कॉमन, x माइनस 1 इक्वल टू 0. काइंडली टेक केयर दैट this x minus 1 and this x minus 1 will be same for each and every time. So common bracket is x minus 1, another one is 2x minus 1 equal to 0.
take x minus 1 equal to 0, hence you will get x equal to 1, that is your 0 number 3, third 0. Another one, 2x minus 1 equal to 0, hence 2x equal to 1, x equal to 1 divided 2, that is your fourth 0. Clear? We were given only root 2 and minus 2, and we have found the remaining two zeros, that is 1 and 1 divide 2. तो अब तक की ये स्टोरी क्या थी, मैं फिर से एक बार आपको रिवाइज कर लेता हूँ कि रूट 2 एंड माइनस रूट 2 जीरोस दिए गए थे किसके, पी एक्स से. हमने उन दोनों का फैक्टर्स निकाला, इन दोनों का फैक्टर्स निकाला, जहाँ से हमको मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या मिला, उसका जी एक्स मिला. फिर हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, पी एक्स एंड डिवाइड किया जी एक्स का, जिसे हमें यहाँ पे कुछ क्यू एक्स मिला. ओके, और आर एक्स तो क्या मिला हमको, 0 मिला. जो क्यू एक्स था उसके भी हमने जीरोस फाइंड करे, तो जो 2 जीरो थे वो हमारे रिमेनिंग जीरो थे. समझ लो, यहाँ तक का ये खास आपको याद रखना था. इट इज़ ओके. अब फिर से एक बार इस सम को कर लीजिए एंड यू विल गेट इट क्लियर आइडिया. इन द लास्ट थियरी ऑफ द चैप्टर मैंने आपको लिखवाया था कुछ ऐसा, पी एक्स इक्वल टू क्यू एक्स इंटू जी एक्स प्लस आर एक्स. क्लियर? ये खास लिख दो. एंड वी कैन से दैट क्यू एक्स इक्वल टू पी एक्स माइनस आर एक्स डिवाइड जी एक्स. ओके, then gx equal to px minus rx divided by qx. Write down these three important statements and formulas. Okay, now we will apply the first formula right now. कैसे क्वेश्चन आएगा? क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होगा, if qx equal to x plus 1, if qx equal to x plus 1 and gx equal to 2x plus 1 and rx equal to 2, find out px. px क्या होगी? Read the statement very well. If qx equal to x plus 1, gx equal to 2x plus 1, rx equal to 2 and px equal to 1. आपको क्वेश्चन कुछ डिफरेंट वे में भी पूछा जा सकता है कि पॉलिनोमियल px is divided with 2x plus 1 and we got the quotient qx equal to x plus 1 and remainder as 2. Find that polynomial. तो आपको खास समझना है कि जिससे डिवाइड होता है वो gx होता है, जो आंसर मिल रहा है वहाँ पे क्वेश्चन में वो होगा x प्लस 1 एंड लास्ट में जो रिमाइंडर बच रहा है वो होगा 2rx. राइट? नाउ हाउ वी विल गोइंग टू फाइंड px. px is qx multiple gx, okay, and plus rx. Okay, so with the help of this rule word mass, we will multiply first and then we will add. Okay, now what was our qx? So our qx will be x plus 1 multiple gx is 2x plus 1, then addition with 2 because 2 was our remainder. Now just multiply x multiple 2x plus 1 multiple binomial with binomial, we have already discussed it. Okay, x, it is 2x square plus x plus 2x plus 1 then plus 2. Find out like terms. There is no like term of 2x. X plus 2x, that is 3x, and 2 plus 1 is 3. This is your answer of px. It is very easy. You can take any examples and you can do. तो मैं आपको सेल्फ ट्राई के लिए कोई एग्जाम्पल दे रहा हूँ. पहले इस सम को समझिए. हमको qx दिया गया था और gx था, फिर rx को ऐड किया, ये फॉर्मूला है. दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया, मल्टीप्लिकेशन और जो रिमाइंडर था उसको ऐड किया. ऐड अगर नेगेटिव है तो भी उसको ऐड ही करना है, तो प्लस माइनस माइनस ही होने वाला है. राइट? तो यहाँ से आपको आंसर मिल गया. ओके, सो दिस सम यू कैन ट्राई इट बाय योर सेल्फ. इफ qx इज x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, gx is 2x plus 1, rx is minus 1. Find out px. Kindly solve the sum and tell us the answer. Okay, next sum कुछ इस तरीके से होगा कि कोई px है. Suppose you are given any px. The px is x cube. The px is x cube minus 3x square. X cube minus 3x square plus x plus 2, that is given px. Now
remainder Rx is minus 2x plus 4, minus 2x plus 4. Quotient Qx that is x minus 2, quotient Qx that is x minus 2. Find out polynomial gx, find out polynomial gx. ओके, नाउ लेट्स डू, समझो। अब gx फाइंड करना है तो gx की फॉर्मूला क्या होगी, gx इक्वल टू, आपने अच्छे से लिखी होगी आगे वाली फॉर्मूला, gx माइनस px माइनस rx डिवाइड qx, हो गया ये। ओके, नाउ व्हाट वाज आवर px, तो px इज x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 माइनस 2x प्लस 4 x माइनस 2। समझ में आ रहा है, जो भी वैल्यू गिवन थी वो ऐसे ही रख दी। ध्यान रहे यहाँ पे ये माइनस तो फॉर्मूला का था एंड यहाँ पे जो माइनस लिखा वो थी हमारी गिवन आर एक्स। ओके, नाउ इट इज एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 2x एंड प्लस माइनस माइनस 4, प्लस माइनस माइनस 4 डिवाइड x माइनस 2, डिवाइड x माइनस 2। नाउ वेन एवर यू विल सिंप्लीफाई दिस, अगर आप उसको सिंप्लीफाई करोगे सो gx क्या हो जाएगा, तो देखो कुछ ऐसे होगा, gx विल बी, लाइक टर्म से आपने कुछ ऐसे किया होगा तो कुछ ऐसे होगा। चलो मैं फिर से लिख देता हूँ उसको, एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस x प्लस 2 प्लस 2x माइनस 4 डिवाइड x माइनस 2, ये हमारा लास्ट था। तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर में भी कुछ नहीं है, x वाले लाइक टर्म देख लो, x प्लस 2x दैट इज 3x प्लस 2 माइनस 4 दैट इज माइनस 2 डिवाइड x माइनस 2। समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ से क्या होगा, अब जो है ना gx, तो gx के आंसर लाने के लिए हमको इन दोनों से डिवाइड करना होगा। इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे और जो आपका क्वोशंट मिलेगा वो आपका आंसर होगा gx का। समझना, अब qx को भूल जाओ, सिर्फ क्वोशंट चाहिए हमको, इसका आप डिवीज़न करिए और जो क्वोशंट आएगा वो आपका gx का आंसर होगा। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन rx विल बी 0, rx क्या होगा, तो rx 0 ही होगा। तो चलो इसको डिवाइड कर लेते हैं, फटाफट डिवीज़न कर लेते हैं। किस किस का डिवीज़न करना था, तो एक्स क्यूब था माइनस 3x स्क्वायर था प्लस 3x एंड माइनस 2 का डिवीज़न x माइनस 2 से। तो चलो फटाफट इसको डिवाइड करते हैं, x है तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, देन एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, चेंज द साइन, अब तो समझ में आ गया होगा। ओके, इट इज़ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x। क्वेश्चन तो नहीं है ना सर माइनस क्यों आया, क्योंकि माइनस 3 बिगर था। ओके, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस एक्स, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, फिर ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, क्या बचा यहाँ पे x, ऊपर से आया माइनस 2, लुक एट हियर, x माइनस 2 प्लस 1, तो x माइनस 2 हुआ वो कैंसिल हो जाएगा, आंसर 0। सो व्हाट इज़ योर, ये जो क्वेश्चन आया वो हमारा आंसर था gx का, वो आंसर क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 and check down, remainder is 0. So kindly revise the whole sum. It is okay. So revise it well and understand each and every term, each and every step. So almost we have completed this chapter. We will discuss some of few questions later and we will start new chapter very soon. Thank you so very much for watching this video. Stay connected with us. Stay healthy. Thank you so very much.